Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome dear students in the subject of Internet Architecture and Protocols. It's Ghulam Yasin, lecturer in Computer Science, University of Education Lahore at DG Khan campus. Dear students, our today's topic is ISP architecture and components. So these are content of today's lecture. Overview of ISP, types of ISP, examples of ISP, factors to consider when choosing ISP, services of ISP, types of links to ISP, and equipment for connecting to ISP. So in the coming slides we will discuss about Internet Service Provider, its architecture and different components of Internet Service Provider. An Internet Service Provider, ISP, also sometimes referred to as an Internet Access Provider, is a company that offers its customer access to the Internet. So dear students, commonly we use internet services at our home or in our offices. So the internet services are provided by different companies, and these companies are called Internet Service Provider or IAP, Internet Access Providers. These companies provide wired services as well as wireless services, and normally nowadays these companies provide broadband services to its customers, residential customers or corporate customers. In other words, ISP is a service and access provider to a business company that provides individuals and organizations access to the internet free or for a monthly or yearly fee. तो normally इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी या आईएसपी इंडिविजुअल्स कस्टमर्स को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को और कंपनीज को एक स्पेसिफिक अमाउंट जो मंथली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर पे की जाती है, उस बेस पर इंटरनेट के डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ये कंपनीज. और इसमें एक पॉइंट है इंटरनेट फ्री. तो नॉर्मल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट एरियाज में पब्लिक को फ्री इंटरनेट सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं. पाकिस्तान में PITB, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, और स्टिल डिफरेंट एरियाज में जो प्रेमिसेस हैं, जिसमें स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ ये सर्विस पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती रही है ये कंपनी. सो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये स्टैंडर्ड है कि पब्लिक के लिए फ्री इंटरनेट सर्विस स्पेसिफिक एरियाज में प्रोवाइड की जाती हैं बाय ISPs. ओवरव्यू. Internet service providers are ISPs which first began to emerge in the late 1980s and early 1990s are the businesses and organizations that provide users with internet access and related services. So normally internet was evolved in 1980s, and after that all over the world will be like a global village. 1980 में different small organizations ने अपने नेटवर्क को ज्वाइन किया, और उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बिग नेटवर्क इवॉल्व हुआ जिसको हम वैन या इंटरनेट कहते हैं. सेकेंड पॉइंट, these providers connect customers to customers of other service providers by way of networks. Often internet service providers, also called internet access providers, are companies that provide telecommunication services
including data communication access and telephone connection. So normally we need two type of transmission. First is voice communication and second is data transmission. So these companies provide these two types of services, voice transmission as well as data transmission. In Pakistan, PTCL is one of the good example which is providing voice transmission as well as data transmission in different areas of our country. For complete internet connectivity, you must be able to reach all destinations on the net. If you are connected to the internet, you can transfer data in all over the world. It means you can reach to all destination where you want. Your packet have to get delivered to every destination. If you are connected to the internet, then your data, your packet must be delivered in 100% manner. Packets from everywhere else have to find you. This is done by having your ISPs advertise routes for you. It means that if any person send data towards yourself or if any person send data to your side, then you must get that data, but all this will be done with the help of internet service provider. तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके डाटा की ट्रांसमिशन और जो आप डाटा रिसीव करते हैं उसके लिए एक ब्रिज है जिसके थ्रू आप डाटा ट्रांसफर करते हैं और डाटा रिसीव करते हैं. Just as their customers pay them for internet access, internet service providers themselves pay upstream ISPs for internet access. An upstream ISP usually has a larger network than the contracting ISP and is able to provide the contracting ISP with access to parts of the internet of contracting ISP by itself has no access to. Normally in our life we see a chain of businesses. अगर हम किसी छोटी शॉप पर जाते हैं तो वो छोटी शॉप या छोटा दुकानदार जो हमें गुड्स या प्रोडक्ट सप्लाई करता है वो उसको खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा होता, वो किसी खुद से बड़ी कंपनी से लेता है या बड़े बिजनेस से लेता है, वो बड़ा बिजनेस किसी और बड़े बिजनेस से लेता है और अल्टीमेटली ये तमाम चेन उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाले तक जाती है. सो like retailer, wholesaler and manufacturer. So likewise, a small ISP, a small company will get the services from large company and that large company will get the services from more large company. And this is a chain of network. AOL America Online is the largest company which is providing the services to different areas of the world. So dear students, in this slide you can see a chain. In bottom line there are end users or businesses, and after that upward local internet service provider, and after that a regional internet service provider, and on the top there are national ग्लोबल इंटरनेट बैकबोन प्रोवाइडर्स. इस तरह से जो नेशनल और ग्लोबल इंटरनेट बैकबोन प्रोवाइडर्स हैं वो लार्ज कंपनीज हैं जो पूरे मुल्क में या पूरे स्पेसिफिक एक इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं. उसके बाद रीजनल लेवल पर जो डिफरेंट रीजन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट सिटीज़ को मिलाकर जो एक रीजन बनाया जाता है, तो ये वो कंपनीज हैं. लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ये वो कंपनीज हैं जो सिटी लेवल पर हैं, और इन द एंड वो एंड यूजर्स या बिजनेसेस हैं जो स्पेसिफिक सिटी में उस स्पेसिफिक एरिया में सर्विसेज यूज करते हैं. पाकिस्तान में PTCL is largest company which is providing services at national level, and nowadays we are also going to access wireless services of different
mobile operator companies like Warid, Ufone, Mobilink, Telenor, and so on. These are our internet access mechanism. We have studied about these mechanisms in the previous lectures as well. For home users, we use dial-up. This is our one of the old method or technique. Next is DSL, digital subscriber line, and ADSL. We have also studied about DSL. Next, broadband wireless access. Nowadays, we use mobile operator service of wireless. Next is cable modem, and next is ISDN integrated services digital network. For medium to large businesses, again DSL, Ethernet technologies, in which we create local area network, and in local area network we use wide area network services or internet services. Next, Ethernet technologies, ISDN integrated services digital network, and the last one is satellite internet. So all these are different mechanisms, different techniques by which we can access internet services at our home or in our offices. Examples of ISPs. So dear students, these are some examples: PTCL, Nayatel, Wiretribe, Comsat's Internet Service, Link.net, QB, and Wateen Telecom. So all those companies which are providing wired services as well as wireless services for internet are called internet service providers. हम डिफरेंट कंपनीज की सर्विसेज लेते हैं, वो सर्विसेज वायर्ड भी हो सकती हैं, वो सर्विसेज वायरलेस भी हो सकती हैं, जिससे हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं और ग्लोबल विलेज से कनेक्ट होकर अपनी डिफरेंट नेसेसिटीज को, अपनी डिफरेंट ज़रूरियात को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं. Some services of internet service providers: providing and maintaining a connection to the internet. This is a service of ISP that the company will provide and maintain the connection which we are going to get, and we are paying for that connection. Support the hardware and software needed to service that connection. उस स्पेसिफिक कनेक्शन के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस चाहिए, जो हमें हार्डवेयर सपोर्ट चाहिए, वो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है. To protect their site and network from external threats such as viruses, hackers attacks, and other illegal activities. So this is the basic responsibility of the company, that the network of company will be controlled, will be saved from hacker, so that viruses or hackers cannot be cannot be disturb the network, so that we may be able to access services. Provide 24 customer service and technical support. Nowadays 24/7 is very commonly used in different companies, so the company is liable to provide 24-hour services to their customers. Factors to consider while choosing ISP. ये कुछ important parameters हैं जब हम किसी भी service provider को choose करते हैं. First of all is bandwidth. So dear students, bandwidth is very important. अगर हमें multimedia applications use करनी है, video conferencing use करनी है, हमें live streaming करनी है, तो हम ऐसी bandwidth use करेंगे, ऐसी कंपनी चूज करेंगे जो हमें बेस्ट स्पीड प्रोवाइड करे और जिसमें बैंडविड्थ बेस्ट होनी चाहिए, बैंडविड्थ की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए. सेकंड इज कॉस्ट, सेटअप एंड सर्विस फी. जब कभी हम इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करते हैं तो हमें एक इंस्टॉलेशन कॉस्ट अफोर्ड करना पड़ती है. वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट जिसमें DSL डिवाइस हो सकती है और इसी तरह से बाकी जो उनकी डिफरेंट कॉस्ट होती हैं, जो इक्विपमेंट की कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, और उसके बाद जो रेगुलर हम पे करते हैं पर मंथ, दैट इज सर्विस फी. वो पर मंथ हमारी
जो भी हमारी फ़ी है जो हम उस कंपनी को पे करते हैं, तो उस बेस पर भी हमें देखना होता है कि हमें किस कंपनी को चूज़ करना है। नेक्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी, रीच, किस तरह से हम उस कंपनी तक पहुंच सकते हैं। क्या हम फ़ोन कॉल करेंगे तो हमारा वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा नेटवर्क का, या हम खुद उस कंपनी तक जाते हैं, एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। डाउन टाइम, व्हाट इज डाउन टाइम? अगर किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन में, दैट में बी 2 मिनट और दैट में बी 10 मिनट्स, कंपनी का नेटवर्क डाउन होता है, तो कितनी देर के बाद वो कंपनी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है और हम अगेन कंपनी से कनेक्ट हो जाते हैं। इट मीन्स डिसकनेक्टिविटी के दौरान कितनी देर हमारा नेटवर्क डाउन रहेगा। अगर ज़्यादा देर डाउन रहेगा तो हम डेफिनेटली इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकेंगे और हमारी डिफरेंट सर्विसेज जो हम एक्सेस करेंगे वो इफेक्ट होंगी। सो डाउन टाइम मस्ट बी लेस। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस, मोबिलिटी, जिसमें हम मूव कर सकते हैं। मोबिलिटी मीन मूव करना। तो नॉर्मल हम जब वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें मोबिलिटी ज़्यादा है, जिसमें हम अपनी डिवाइसेस को मूव कर सकते हैं एक स्पेसिफिक रेंज में जहां सिग्नल्स होते हैं। दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। सर्विसेज ऑफ आईएसपी, इंटरनेट एक्सेस। आईएसपी हमें इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती है। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट सर्विस ऑफ आईएसपी, जिसमें जब हम किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो उस वेबसाइट को डिज़ाइन करने के बाद उस वेबसाइट का एक पूरा होस्टिंग प्रोसेस है, उस वेबसाइट का एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट भी यही है, डोमेन होस्टिंग। तो वो कंपनी हमें उस स्पेसिफिक नाम के अगेंस्ट, उस स्पेसिफिक नेम के अगेंस्ट होस्टिंग या रजिस्ट्रेशन सर्विस भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज डायल अप एक्सेस। This is very common old technique by which we can access internet service. And next is lease line access. Lease line, these are dedicated lines and the speed of internet access is very fast. So these are some services which are provided by internet service provider. So dear students, this is our last topic of today's lecture. टाइप्स ऑफ लिंक टू आईएसपी। हम किस तरह से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से अटैच होकर इंटरनेट की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज वायरलेस, विच इज मोस्ट कॉमनली यूज मेथड नाउअडेज। रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ टेलीफोन और केबल नेटवर्क। वन ऑफ द greatest advantage of wireless internet connection is the always on connection that can be accessed from any location that falls within network coverage. When we use wireless communication, when we use wireless access, we are in specific area and there must be a wireless access point, which is a device by which we can get signals at our laptop or cell phone, and after connecting to that wireless access point we can get internet services. Wireless connections are made possible through the use of modem, which picks up internet signals and send them to the other devices. We have studied about modem, modulation, demodulation. This was device which was used for data transmission and signal conversion. So over here modem is used for the connection, for the setup of different connections. Types of link to ISP. This is our second technique by which we can access internet services. Most commonly used method nowadays. Many cell phone and smartphone providers offer voice plans with internet access. Mobile internet connections provide good speeds and allow you to access the internet on the go. आजकल हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो स्मार्टफोन पर डिफरेंट कंपनीज हमें ना सिर्फ वॉइस के डिफरेंट पैकेजेस देती हैं बल्कि डाटा के या डाटा ट्रांसमिशन के भी डिफरेंट पैकेजेस देती हैं, और इस तरह से हम अपने सेल फोन पर ही बगैर किसी न्यू सेटअप के, बगैर किसी न्यू डिवाइस के
जो ऑलरेडी हमारे पास स्मार्टफोन है हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो जस्ट हमें उस स्पेसिफिक कंपनी की सर्विस के लिए किसी स्पेसिफिक पैकेज को एक्टिवेट करना होगा और उसके बाद हम उस स्पेसिफिक पैकेज को एक्टिवेट करने के बाद डाटा नेटवर्क के थ्रू अपने स्मार्टफोन से अपने सेल फोन से इंटरनेट सर्विसेज को एक्सेस कर रहे होते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। Next is hotspots. Hotspots are sites that offer internet access over a wireless local area network (WLAN) by way of a router that then connects to the internet service provider. Hotspots utilizes Wi-Fi technology which allows electronic devices to connect to the internet or exchange data wirelessly through radio waves. ये भी एक commonly used इंटरनेट एक्सेस मैकेनिज्म है जिसमें हम वाईफाई टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपने सेल फोन पर हम वाईफाई टेक्नोलॉजी ऑन करते हैं और अपने सेल फोन पर हम इंटरनेट सर्विस एक्सेस करते हैं with the help of specific device. Again that device is wireless access point और उसके बाद हम अपने सेल फोन से मल्टीपल डिफरेंट डिवाइसेस के साथ इंटरनेट शेयर करते हैं with the help of hotspot. So this is again a common internet access mechanism nowadays. Next mechanism is broadband. This high-speed internet connection is provided through either cable or telephone companies. One of the fastest option available, broadband internet uses multiple data channels to send large quantities of information. The term broadband is shortened for broad bandwidth. Broadband internet connection such as DSL, digital subscriber line, and cable are considered high bandwidth connection. So dear students, जब हम हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहते हैं या हमें ज़्यादा बल्क में डाटा ट्रांसमिशन करना होता है तब हम ब्रॉडबैंड सर्विसेज यूज़ करते हैं और ब्रॉडबैंड सर्विसेज मल्टीपल कंपनीज बेस्ट डाटा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करती हैं एंड PTCL is one of the best company which is providing broadband services to its customers. Types of link to ISP. Satellite. In certain areas where broadband connection is not yet offered, a satellite internet option may be available. Similar to wireless access, satellite connection utilizes a modem. Dear students, first of all, we will explain about this slide. Broadband connection in which we use multiple services like data services, voice services, and smart TV even yet nowadays. And in those areas where the broadband connection is not offered, satellite system is used to offer these services. And likewise wireless access in which we use wireless access point, WAP, in different areas which is also used to say modem. Modulation, demodulation, a process of conversion digital to analog and analog to digital conversion. तो इस तरह से सैटेलाइट सिस्टम हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ नॉर्मली ब्रॉडबैंड कनेक्शन उस तरह से ऑफर नहीं होता जिस तरह से हम नॉर्मल अपने एरियाज में देखते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, वॉइस सर्विसेज जिसमें हम ट्रेडिशनल वॉइस कॉल करते हैं या हम डिफरेंट और सिस्टम यूज़ करते हुए जिसमें हम इंटरनेट यूज़ करते हुए भी वॉइस ट्रांसमिशन करते हैं। इसी तरह से डाटा ट्रांसमिशन जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसफ़र करते हैं और ये हमारी आजकल की बहुत इम्पॉर्टेंट नीड है जो हम ऑर्गेनाइजेशनल या इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी डाटा ट्रांसफ़र करते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है। और इसके अलावा जो हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं वो नॉर्मल हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए जिसमें हम ऑडियो फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, वीडियो फाइल ट्रांसफ़र करते हैं एंड सो ऑन। और इसी तरह से सैटेलाइट सिस्टम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है दैट इज़ ब्रॉडकास्ट। So what is broadcast?
नॉर्मल अपनी लाइफ में आपने ये वर्ड सुना होगा, ब्रॉडकास्टिंग, पीटीवी, और इसी तरह से जो डिफरेंट चैनल्स हैं वो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब ये ब्रॉडकास्टिंग क्या है? डिफरेंट एरियाज में फ्रीक्वेंसीज एलोकेट होती हैं और पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड है FAB जो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एलोकेट करता है, और ये फ्रीक्वेंसीज टेलीविजन्स के लिए भी हैं और इसी तरह से जो हम डिफरेंट रेडियो स्टेशन सुनते हैं उनके लिए भी हैं, जो हम डिफरेंट FM ट्रांसमिशन सुनते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन। तो इस तरह से स्पेसिफिक एरिया में उन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पर सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट होते हैं और हम अपने टीवी या हम अपने FM से स्पेसिफिक नंबर को डायल करते हैं, स्पेसिफिक नंबर को ट्यून करते हैं और उस स्पेसिफिक नंबर पर हम ट्रांसमिशन सुनना स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर हम FM 98 की ट्रांसमिशन सुनना चाहते हैं तो FM 98 की ट्रांसमिशन जिस जिस एरिया में होगी वहां हम FM 98 अपने सेलफोन से जस्ट हम डायल करेंगे और उस स्पेसिफिक एरिया में हम ट्रांसमिशन को सुनना स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम एंड लाइकवाइज all different television stations which provide different types of transmission, live transmission or recorded transmission, this is on satellite base। और ये सैटेलाइट ग्लोबल, एक पूरे ग्लोबल को कवर करती हैं, पूरी दुनिया को कवर करती हैं जो सैटेलाइट बेस्ड ट्रांसमिशन है। और इसका बेसिक आर्किटेक्चर उसी तरह से है जो हमारे सेलुलर नेटवर्क का बेसिक आर्किटेक्चर है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस स्लाइड मोर बिकॉज सैटेलाइट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से हमारा एक सेलुलर सिस्टम है उसी तरह से हमारा ये सिस्टम जो हम यूज करते हैं सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम को हम यूज करते हैं। Dear students, this is our last slide of this topic, equipment for connecting to ISP। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होने के लिए या हमें इंटरनेट सर्विसेज के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो कुछ बेसिक इक्विपमेंट यहाँ मेंशन है। ऑल्दो इसके अलावा भी हमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स चाहिए होती हैं कंज्यूमर एंड पर और सर्विस प्रोवाइडर एंड पर, तो हम डेफिनेटली पूरा एक नेटवर्क यूज करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस का। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मोबाइल फोन विच इज आल्सो कॉल्ड सेल फोन, जिसको हम मोबाइल फोन या सेल फोन कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड मोबाइल स्टेशन, जिसको हम मूव करते हैं, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जो हमारी डिवाइस होती है। और इस सेल फोन में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वैसे तो हम सब सेल फोन यूज करते हैं लेकिन इस सेल फोन में हम एक सिम यूज करते हैं। सिम स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, और वो एक स्पेसिफिक कंपनी हमें ऑफर करती है और उस कंपनी का हम एक स्पेसिफिक नंबर यूज करते हैं। इसके अलावा हम सेल फोन को यूज करते हुए जो बेसिक कनेक्ट होते हैं वो हम कनेक्ट होते हैं टावर के साथ, और उसकी वजह से हमारे सेल फोन पर सिग्नल्स आते हैं। एंड दैट टावर इज कॉल्ड बेसिकली स्विचिंग सेंटर, दैट इज बेस स्टेशन और बेस स्विचिंग सेंटर। जो टावर हम देखते हैं और डिफरेंट एरियाज में वो टावर्स होते हैं जिससे हम कनेक्ट होते हैं, और नॉर्मल उन टावर्स की रेंज 10 to 40 किलोमीटर्स के रेडियस में होती है। सो दिस इज कॉमनली यूज सेल फोन नाउअडेज, और आजकल हम स्मार्टफोन यूज करते हैं जिसमें हम एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं और उससे हम इंटरनेट की सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड इज मॉडेम, दिस इज कॉमनली यूज डिवाइस। Modulation, demodulation, and modulation is a process to convert digital data into analog signals, and demodulation is a process to convert again analog signals into digital data. So this modem may be internal modem or this may be external modem. Nowadays we are going to use external modem like DSL modem, which is used at home or at offices, and likewise different modems are used एट सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस प्रोवाइडर के एंड पर भी मॉडेम यूज होते हैं। नेक्स्ट सैटेलाइट रिसीवर, हमने प्रीवियस स्लाइड में सैटेलाइट की बात की थी। अगर हम सैटेलाइट बेस्ड ट्रांसमिशन एक्सेस कर रहे हैं तो हमें सैटेलाइट रिसीवर चाहिए, और उन सैटेलाइट रिसीवर्स पर हम डिफरेंट तरह की डिफरेंट कम्युनिकेशन को सुन सकते हैं और इसी तरह से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इज टेलीफोन लाइन और लैंडलाइन। नॉर्मली जब हम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL यूज करते हैं, वी हैव स्टडीड दिस टॉपिक इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। सो वी नीड अ लैंडलाइन और टेलीफोन लाइन, एंड ऑन दैट टेलीफोन लाइन और दैट टेलीफोन or typical PSTN telephone system, we can access internet services.
तो हमें PTCL से एक स्पेसिफिक कनेक्शन परचेज करना होता है, हमें DSL इंटरनेट सर्विस टेक्नोलॉजी के लिए हम एक लैंडलाइन परचेज करते हैं और हम उसी स्पेसिफिक लाइन पर इंटरनेट की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट इज फाइबर ऑप्टिक्स लिंक। This is latest and this is fastest type of internet access. इसमें हमारा एक पूरा फाइबर ऑप्टिक का नेटवर्क है। फाइबर ऑप्टिक, this is a type of transmission media. This is type of wired media. There are three types of wired media, twisted pair cable, coaxial cable and fiber optic cable. So nowadays, fiber optics links are provided to different companies which want to transfer or which want to receive high speed data transmission. तो हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन के लिए नॉर्मल बिग ऑर्गेनाइजेशंस या वो ऑर्गेनाइजेशन जिनकी डाटा ट्रांसमिशन स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए, डाटा रिसीविंग स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए, अपलोडिंग डाउनलोडिंग फ्रीक्वेंटली होती हैं उन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वहाँ फाइबर ऑप्टिक्स लिंक्स यूज किए जाते हैं। So these are basic equipments which we need to connect ISP. I'm going to again repeat: mobile phone, which is also called cell phone or mobile station; modem, this may be internal modem or external modem; satellite receiver used for satellite system; telephone line or landline used for digital subscriber line; and last one is fiber optics link, which is used for fastest communication. So dear students, thank you very much for your concentration, for your learning, for your passion. I hope best of luck for all of you always.